I hope I'm audible and visible. Give me one moment. ओके सो ग्रेट यस गुड इवनिंग एवरीवन जय हिंद। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज कॉम्प्रीहेंशन वेरी इजी टॉपिक। सो बिफोर वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग लेट मी शो यू द लाइव क्लास शेड्यूल फॉर टुडे। टुडे इज 19th नवंबर और सुबह 9 बजे डेली डिफेंस की अपडेट्स की क्लास हो चुकी है। एसएसबी इंटरव्यू के लिए हमारे हर रोज 9:30 से क्लास होता है। एफकेट के लिए करंटली 2 क्लासेस चल रही है। 5:30 बजे मेरे साथ इंग्लिश का क्लास है और इसके बाद आपका नेक्स्ट क्लास 8:30 बजे मैथ्स का होगा। एनडीए के लिए देर आर 4 क्लासेस। 12:30 बजे जीके की क्लास थी बाय दिव्यांशु सर। 4 बजे केमिस्ट्री की क्लास थी बाय शिवांगी मैम। 5:30 बजे मेरे साथ इंग्लिश का क्लास है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्लास 7 बजे होगा मैथ्स का। सीडीएस के लिए भी सेम है। 12:30 बजे जीके की क्लास थी। 4 बजे केमिस्ट्री की मेरे साथ इंग्लिश का क्लास है और अभी आपका नेक्स्ट क्लास होगा 8:30 बजे ऑन मैथ्स। ओके so this is as usual, we all know the drill. Okay, I will show you the passage, you will read it and then we will solve the questions. Okay, so I am going to show you the first passage जो 2 slide में है. Okay, I'm showing you the first slide. Once you are done with the reading of the first slide, you will ask me in the chat. I will change the slide. Okay, so here you go. This is first slide. Everybody please start reading. Once you are done, let me know in the chat. I will change the next slide. Okay, I'm changing to the next slide.
Okay, we will read the passage from the beginning once. India is a country of villages. Rural population still dominates the urban population as far as the number is considered. This is despite the fact that there is rampant migration of rural families to urban centers. Generally, the gains of being a unit of the urban population are less than the disadvantages and risks that are inbuilt in the urban life. Crime, riots, etc., are some of the examples of such risks of urban life. The forces that generate conditions conducive to crime and riots are stronger in urban communities than in rural areas. Urban living is more anonymous living. It often releases the individual from community restraints, more common in tradition oriented societies. But more freedom from constraints and controls also provides greater freedom to deviate. And living in the more impersonalized, formally controlled urban society means that regulatory orders of conduct are often directed by distant bureaucrats. The police are strangers executing these prescriptions on an anonymous set of subjects. Minor offenses in small town or village are often handled without resort to official police action. As disputable as such action may seem to be, it results in fewer recorded violations of the law compared to those in the big cities. Although perhaps causing some decision difficulties for the police in small town, formal and objective law enforcement is not always acceptable to the villagers. Urban area with mass population, greater wealth, more commercial establishments, and more products of our technology also provide more frequent opportunities for theft. Victims are impersonalized, property is insured, consumer goods in more abundance, are vividly displayed, and are more portable. The crime rate increases despite formal moral education given in schools. Okay, so now we will start answering the question. First one. Which of the following would be the best title for the above passage? B. Okay, rural urban rift. Everybody is answering B. The answer actually is C. Okay, not B. Rift matlab difference. Rift means a kind of conflict. It's not rural and urban conflict. It is basically focusing more on the risks associated with the urban life. It's a comparative sketch. कंपेयर किया जा रहा है रूरल और अर्बन लाइफ का कंपैरिजन है, लेकिन ज्यादातर फोकस किस पे है? द रिस्क्स एसोसिएटेड विद अर्बन लाइफ. सो इसीलिए सी विल बी द most appropriate title, hazards of urban life. Next question. The passage mainly emphasizes the okay. Paras is saying B. Jitesh, Kumkum. Okay, everyone is saying B, and here you are absolutely right. B hoga right answer because the passage is mainly focusing on the reasons why crime rate is greater in urban centers as compared to rural areas. Next question. The author thinks that risks and disadvantages are okay. Paras is saying D, more than the gains in urban life. C, almost negligible. Okay, the answer is D. So Paras is absolutely right. Directly likha tha that generally the gains of living in urban areas are less than the disadvantages and risks that are inbuilt in urban life. ये line लिखा था, right? इसका मतलब क्या है कि urban life में जो gains है वो कम है, disadvantages ज्यादा है, risk ज्यादा है. So direct statement था ये passage में, इसलिए D आंसर होगा. रूरल लाइफ में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल नहीं है, वो रिपोर्ट्स नहीं होते, दे आर लेस रिपोर्टेड. ओके, नेक्स्ट वन. Which of the following is a characteristic of an urban setting?
मिनिमल अपॉर्चुनिटीज ऑफ क्राइम, कहाँ लिखा है भाई कि क्राइम कम होता है अर्बन सेटिंग में? पूरे पैसेज में लिखा है क्राइम ज्यादा हो रहा है अर्बन सेटिंग में। हाउ कम बी इज द आंसर? अनरिपोर्टेड माइनर क्राइम्स कहाँ लिखा है पैसेज में? The answer will be option A. Yes, Jitesh only has answered correctly. Less forceful social control. सोशल कंट्रोल कम है वहां पे जो रूरल एरिया में रहता है, विलेजेस में रहते हैं, सोशल कंट्रोल ज्यादा है। लेकिन अर्बन एरिया में तो कोई किसी को नहीं जानता, इम्पर्सनल है सब। राइट, एवरीवन इज, इट्स एन ऑटो, इट्स एन एनोनिमस लिविंग। So less forceful social control is there in urban settings. So yes, that is a characteristic. Next question. Which of the following statements is true in the context of the passage? पैसेज के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट सही है? A, C, D. Varied answers. Answer is C. Okay, Paras has answered correctly. पर्सनल कांटेक्ट कम है, इसीलिए अर्बन एरियाज में क्राइम ज्यादा है। डी कैन नॉट बी द आंसर जयेश यादव, बिकॉज इट इज नॉट द मेन कॉज, इट इज वन ऑफ द कॉजेस। बहुत सारे कॉजेस में से एक है, लेकिन इट इज नॉट द मेन कॉज। कहीं पे भी लिखा नहीं है पैसेज में कि ये मेन कॉज है। सेकंड, बहुत लोग कह रहे थे ए राइट आंसर है। स्मॉल कम्युनिटीज हैव मोर माइनर क्राइम्स, माइनर क्राइम्स के बारे में कुछ नहीं लिखा है, और ये नहीं लिखा है पैसेज में कि स्मॉल कम्युनिटीज में या रूरल एरियाज में माइनर क्राइम ज्यादा होते हैं अर्बन सेंटर से ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंस और इन्फरेंसेस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ द पैसेज? सी, बी एंड सी ओनली। ओके, जितेश साहू इज सेइंग बी एंड सी। व्हाट अबाउट अदर्स? एब्सोल्युटली राइट आंसर है। यस, ए तो होगा ही नहीं जयेश, ए तो होगा ही नहीं। अरे आर्यन भी, ए एंड सी कैन, ए कैसे हो सकते हैं? ए में क्या लिखा है? माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन सेंटर्स इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। नहीं, पैसेज के बिगिनिंग में ही लिखा था ये, दैट ऑल्दो देयर आर नंबर ऑफ पीपल आर इंक्रीजिंग। देखो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, सो यू विल नो। इट वॉज रिटन इन द बिगिनिंग ऑफ द पैसेज इटसेल्फ। सी, the rural population still dominates the urban population as far as the number is considered. This is despite the fact that there is rampant migration. Rampant matlab bahut zyada of rural families to urban centers. So this is not true, right? जो ये A में लिखा है, that is not true. That the migration of people from rural to urban centers is almost negligible. Rampant migration हो रहा है, तो A is not true. B and C are true. Okay, चलो next. We will move on to the next one here. Next question. The behavior of people is generally molded because of social control in non-traditional societies. Social control कहाँ रहता है? What is the meaning of non-traditional societies? अच्छा, मैं आंसर बता देती हूँ फिर मैं समझाती हूँ। आंसर इज डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, वाई? एनोनिमस फॉर्म ऑफ लिविंग किसको कहा जाता है? अर्बन लिविंग को या रूरल लिविंग को? अर्बन लाइफ को। एनोनिमस, कोई किसी को नहीं जानता। सोशल कंट्रोल कैन नॉट बी देयर इन
इन अर्बन लाइफ, राइट। नॉन ट्रेडिशनल सोसाइटी का मतलब है जो ट्रेडिशनल सोसाइटी के खिलाफ है, नहीं फॉलो करता। ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर विलेजेस, नॉन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर सिटीज और टाउन्स, जहां पे एवरीवन इज अ स्ट्रेंजर। अगेन सोशल कंट्रोल कैन नॉट बी इन अ नॉन ट्रेडिशनल सोसाइटी। ओके, सो एंड द प्रेजेंस ऑफ पुलिस अथॉरिटी में तो सोशल कंट्रोल होता ही नहीं है। So answer is D, none of these. It actually happens in traditional societies, which are villages. Next question. It can be inferred from the passage that urban crime can be controlled by. कैसे कंट्रोल किया जाएगा अर्बन क्राइम को? Enforcement of law by distant bureaucrats. It's already there. You guys have not read the passage thoroughly, I guess. ध्यान से नहीं पढ़ा। It's already there ना। अर्बन सेटिंग में तो ऑलरेडी जो लॉ है वो डिस्टेंट ब्यूरोक्रेट्स बना रहे हैं। दे डू नॉट नो फॉर whom the laws are being made. The answer is B, making expensive consumer goods less portable. फिर से मैं लेकर जाऊंगी आपको पैसेज की ओर, ठीक है। डी जो लोग कह रहे ग्रेटर एम्फोसिस ऑन मॉरल एजुकेशन, नो, डिस्पाइट दैट ऑल्सो क्राइम इज हैपनिंग। देखो यहाँ पे लिखा है ना लास्ट लाइन में, सी द क्राइम रेट इंक्रीजेस डिस्पाइट फॉर्मल मॉरल एजुकेशन गिवन इन स्कूल्स। मतलब ज्यादा दो कम दो डज नॉट मैटर, क्राइम रेट इज इंक्रीजिंग इवन इफ देयर इज मॉरल एजुकेशन गिवन फॉर्मली इन स्कूल। अच्छा यहाँ पे देखो क्या लिखा है, living in the more freedom from constraints and control also provides greater freedom to deviate. Living in the more impersonalized, formally controlled urban society means regulatory orders of conduct are often directed by distant bureaucrats. The police are strangers executing these prescriptions on an anonymous set of subjects. So it's already happening. यहाँ क्या लिखा है देखो, why the crime rates are increasing. Urban areas with mass population, greater wealth, you can follow. More commercial establishments, more products of our technology also provide more frequent opportunities for theft. Victims are impersonalized. You have no relation with the victims. Property is insured. Consumer goods in more abundance are vividly displayed and are more portable. तो अर्बन क्राइम लेस करने का क्या वो है, मतलब सोल्यूशन क्या है, that it becomes less portable. ओके, घुमा के क्वेश्चन किया गया है। So answer is B, making expensive consumer goods less portable. Okay. Moving on, next question. The author's view of traditional societies is best expressed by which of the following? Traditional societies का मतलब मैंने समझाया है, उसके बारे में ऑथर का क्या व्यू है? B, they do not have adequate modern technology. उससे क्या है? टेक्नोलॉजी के साथ पूरे पैसेज में क्या रिलेशन है? दे आर टॉकिंग अबाउट क्राइम्स। कहाँ लिखा है? सी, you have to select the answer as per what is written in the passage. पैसेज में मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, एडिक्वेट मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, कहाँ लिखा है? Hitesh is saying A, they provide inadequate freedom for personal movements and travel. The answer is D, okay? They provide less freedom for the individuals in many circumstances. ठीक है, ऐसा नहीं कि पर्सनल मूवमेंट और ट्रैवल में ही सिर्फ रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन इज देयर सोशली. In traditional societies there is always community restraint over the individuals. तो इंडिविजुअल को लेस फ्रीडम दिया जाता है, ऐसा नहीं कि फ्रीडम दिया ही नहीं जाता. पर्सनल मूवमेंट मतलब घूमने फिरने में, ऐसा नहीं कि विलेज में आप इधर उधर घूमो तो आपको रोका जाएगा, है ना, या ट्रैवल करना नहीं दिया जाएगा. दे प्रोवाइड लेस फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल इन मेनी सर्कमस्टांसेस, है ना, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस. सो इसीलिए डी इज द बेटर ऑप्शन. क्लियर? नेक्स्ट वन. According to the passage, this is the last question from this passage. According to the passage, the crime in small towns
डी होगा। एब्सोल्युटली राइट। स्मॉल टाउन, सिटीज नहीं, छोटे मोटे टाउन्स या विलेजेस में क्राइम क्या होता है, दे आर लेस फ्रीक्वेंटली रिपोर्टेड और डेल्ट विथ ऑफिशियली। ऑफिशियली डील नहीं किया जाता या बहुत कम रिपोर्ट किया जाता है। ओके, माइनर ऑफेंसेस इन स्मॉल टाउन्स और विलेजेस आर ऑफन हैंडल्ड विदाउट रिसोर्ट टू ऑफिशियल पुलिस एक्शन। ये लाइन था पैसेज में, राइट? सो डी इज द राइट आंसर। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज, सो आई विल गिव यू टाइम टू रीड इट। ये एक ही स्लाइड का है, दिस इज अ स्मॉलर पैसेज, सो एवरीवन प्लीज रीड इट क्विकली। Okay, easy passage comparatively. Let's read it, okay, together. Genetic variation is the cornerstone of evolution, without which there can be no natural selection, and so a low genetic diversity decreases the ability of a species to survive and reproduce, explains lead author Yoshan Moodley, professor at the Department of Zoology, University of Venda in South Africa. 2 centuries ago, the black rhinoceros, which roamed much of sub-Saharan Africa, had 64 different genetic lineages. But today, only 20 of these lineages remain, says the paper. The species is now restricted to 5 countries: South Africa, Namibia, Kenya, Zimbabwe, and Tanzania. Genetically unique populations that once existed in Nigeria, Cameroon, Chad, Eritrea, Ethiopia, Somalia, Mozambique, Malawi, and Angola have disappeared. The origins of the genetic erosion coincided with the colonial rule in Africa and the popularity of big game hunting. From the second half of the 20th century, however, poaching for horns has dramatically depleted their population and genetic diversity, especially in Kenya and Tanzania. तो इस टाइप के पैसेजेस आपको एफकैट में या एनडीए में मिलेगा। एनडीए में आजकल थोड़ा डिफिकल्ट पैसेज, एडवांस्ड लेवल के पैसेज दे रहे हैं। यू विल गेट दिस काइंड ऑफ पैसेजेस इन एफकैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चन नाउ। फर्स्ट वन, what is important for evolution? C, absolutely right answer. So the passage is about genetic variation. So C is the right answer. Genetic variation is important for evolution. It's the cornerstone for evolution. Next one. Sub-Saharan Africa has lost how many black rhino genetic lineages in 200 years? 20? 64? The answer is 44. Okay? 44. Why? Actually 40 होगा, 44 नहीं 44 होगा। देखो, they had 64 different genetic lineages. अभी सिर्फ 20 बचा है। 20 of these lineages remain. That means how many they have lost? 44. 20 तो बचा है अभी, है ना? 64 पहले था। जितेश कुमकुम, दोज ऑफ यू आंसर्ड सी। जयेश, ठीक है, बचा अभी 44 है। सॉरी, खोया है 44, बचा 20 है। सो डी इज द राइट आंसर। सो प्लीज रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। नेक्स्ट वन, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट,
Genetically unique black rhinoceros has been lost in all of the following countries except Tanzania. Absolutely right answer. Aryan remembers, very good. Kumkum also remembers, very good. Tanzania में है. देखो again if you go back to the passage, I know some people must be feeling कि अरे passage तो नहीं देख पा रहे हैं, है ना? देखो, they are restricted to 5 countries only. Second line of the second paragraph. The species is now restricted to 5 countries. South Africa, Namibia, yes, Kenya, Zimbabwe, Tanzania. बाकियों में they have been lost. That is Nigeria, Cameroon, Chad, ये सारे जगहों पे they have disappeared. So they are lost in Nigeria, Malawi, Chad, but in Tanzania they are there. Yes, so C is the right answer. Next one. From the second half of the 20th century, what has caused a dramatic fall in black rhinoceros population? Very good. Yes. Answer is C. Yes, Aryan Kumkum. Answer is C. Poaching के साथ साथ उनका जो पॉपुलेशन है वो और गिर गया है. लास्ट लाइन में लिखा था. Yes. Next one. Last question. Genetic diversity is proportional to. Very good, Mihir. A is the right answer. The ability, very good, Kumkum, of a species to survive and reproduce. First line में था. It was an easy passage, right? चलो. Now we will move on to the next passage. इसके भी 2 slides है. I am showing you the first slide. Once you have done with reading the first slide, you let me know in the chat. I'll change the slide. Everyone, please start reading. Yes, guys, are you done with the first slide? I'm changing it.
You need to be very quick, guys. इतना धीरे धीरे पढ़ोगे तो it will not work in the actual exam. Okay, please improve your reading habit. Start reading every day so that your speed of reading increases. Okay, it does not take that much time to read. Let's read it together once, guys. Street theater in India is a well established ancient art form. Despite the proliferation of modern means of entertainment and communication, street theater continues to flourish in India. Street theater as a channel of communication has for centuries been propagating reforms by highlighting social, economic, and political issues present in the society. Unlike in the olden days, its performance is no longer restricted to villages or small localities of the city. Today, small groups of performers, including students, would stage performances to mobilize public opinion or to help create or raise awareness over a particular issue of public importance. Themes on substance abuse, AIDS awareness, and domestic violence are some of the areas highlighted by contemporary street theater troupe. Unlike in regular drama, street drama employ very little props and images. The human body becomes the main tool in which choreography, mime, dialogues, songs, and slogans are extensively used. Street theater is one of the most intimate media. Its appeal is to the emotions, leading to quick psychological impact on audiences. By being local and live, they also are able to establish not only direct contact with the audience, but by being cost effective and flexible, they are popular among all age groups. Okay, so the passage is about street theaters. Let's start answering the question now. First one, modern means of entertainment and communication dash street theater. फर्स्ट पैराग्राफ में था very good, Paras. Answer is C. They does not affect the street theater. It is still a popular mode of taking up crucial societal issues. Next one. In the olden days, street theater dashed to villages or small localities of the city. Was not restricted. Olden days में क्या था? पुराने टाइम में. अभी they are not restricted. In the olden days, they were restricted. Yes. B is the right answer. They were restricted to villages. यहाँ पे देखो passage में लिखा है. Unlike in the olden days, second sentence of second paragraph. Unlike in the olden days, its performance is no longer restricted to villages or small localities of the city. इसका मतलब in olden days they were. Okay. Next. Street theater usually dash with issues of public importance. Very good. It usually deals with, yes, B is the right answer. They deals with issues of public importance. Next question. Street theater is dashed to stage. Very good. Street theater is reasonable to stage. Street theater is reasonable to stage. Why? Because in street theater, props and images are not used as it is used on stage. Okay, huge setup की जरूरत नहीं होती है. Very good. Last question. Street theater creates an or a dash impact on audiences. Very good. It creates an emotional impact which has a psychological effect on the mind of the audience. So option C is the right answer. Emotional, which leads to psychological impact. Now moving on to the next passage. इसके लिए भी आपको 2 slides रहेगा. This will be the last passage. Mystical is means religious, spiritual. Mystical is spiritual. Okay. अच्छा, next passage will be the last one. इसके भी 2 slides है. Read the first slide quickly. Let me know in the chat. I'll change it. Okay, this is the first slide. Everyone read it quickly. And please let me know in the chat to change it.
Okay, I'm changing the slide. Okay, let's read it together now from the beginning. We have inherited the tradition of secrecy about the budget from Britain, where also the system has been strongly attacked by eminent economists and political scientists, including Peter J. Sir Richard Clarke, who was the originating genius of nearly every important development in the British budgeting techniques during the last 2 decades, has spoken out about the abuse of budget secrecy. The problems of long term tax policy should surely be debated openly with the facts on the table. In my opinion, all governments should have just the same duty to publish their expenditure policy. Indeed, this obligation to publish taxation policy is really essential for the control of public expenditure in order to get realistic taxation implications. Realizing that democracy flourishes best on the principles of open government, more and more democracies are having an open public debate on budget proposals before introducing the appropriate bill in the legislature. In the United States, the budget is conveyed in a message by the president to the Congress, which comes well in advance of the date when the bill is introduced in the Congress. In Finland, the parliament and the people are already discussing in June the tentative budget proposals, which are to be introduced in the Finnish parliament in September. Every budget contains a cartload of figures in black and white, but the dark figures represent the myriad lights and shades of India's life, the contrasting tones of poverty and wealth, and of bread so dear and flesh and blood so cheap, the deep tints of adventure and enterprise, and man's ageless struggle for a brighter morning. The union budget should not be an annual scourge, but a part of presentation of annual accounts of a partnership between the government and the people. That partnership would work much better when the nonsensical secrecy is replaced by openness and public consultations, resulting in fair laws and the people's acceptance of their moral duty to pay. I know the passage is quite difficult for many of you to understand. In exam आपको टाइम मिलेगा, आप 2-3 बार ऐसे पैसेजेस को पढ़ो, समझो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है? बट because of the time constraint that we have right now, we will try to answer the question with whatever we have understood from the passage. Okay, let's try. Chalo, first question. How do the British economists and political scientists react to budget secrecy? They are okay. Paras is saying A. They are very critical. Very good. Yes, they have critiqued. वो लोग सपोर्ट नहीं करते कि सीक्रेसी बजट के लिए मेंटेन करना नहीं, मतलब दे से ये नहीं करना चाहिए. So yes, you are absolutely right, Paras and Jitesh. A is the right answer. Next, the author thinks that openness in budget is essential as it leads to
मेकिंग आवर कंट्री ऑन पार विथ फिनलैंड। बजट में ओपननेस क्यों लेकर लाना है? The answer will be D, none of these. They don't want कि इकोनॉमी का स्ट्रेंथ या वीकनेस देखना चाहिए, दिखाने के लिए बजट ओपनली डिस्कस करना है। नो, दे डोंट वांट टू मेक आवर कंट्री इन एज इन फिनलैंड। दे डोंट वांट टू ओपननेस इन बजट। उनको नहीं लगता कि इससे लोग और रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मतलब अनविलिंग हो जाएंगे अपने मॉरल ड्यूटीज को एक्सेप्ट करने के लिए। नो, व्हाई द ऑथर थिंक्स ओपननेस इन बजट इज एसेंशियल? Because it will lead to the control of public expenditure so that realistic taxation implications could be set. ये लिखा था पैसेज में, राइट? सो नन ऑफ दीज विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन। द ऑथर सीम्स टू बी इन फेवर ऑफ, किसके फेवर में है ऑथर? मेंटेनिंग सीक्रेसी ऑफ बजट। आर यू श्योर? कुमकुम मिहिर इज सेइंग ए। द आंसर इज सी। ठीक है, ऑथर दोनों ही चीज देखे हैं। बजट की सीक्रेसी का भी कारण देखा है उन्होंने, ओपननेस क्यों रहना चाहिए वो भी देखे, बट he has presented the examples of both the kind of budget system, open and secret, and he has tried to look into all their aspects. So the author does not seem to be favor of either open or secret. He wants that there should be a judicious blend of secrecy and openness. Okay, so C is the right answer. Next one. The secrecy of the budget is maintained by all of the following countries except. कौन से कंट्री में मतलब मेंटेन नहीं होता है? इंडिया में। द आंसर विल बी बी। ओके, फिनलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं होता। देखो घुमा के कैसे क्वेश्चन पूछा गया। रीड द क्वेश्चन अगेन। द सीक्रेसी ऑफ द बजट इज मेंटेन्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एक्सेप्ट। तीनों कंट्री का नाम है, फिनलैंड, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स। सारे में मेंटेन होता है सिवाय कौन से कंट्रीज के? मतलब मेंटेन नहीं होता है सीक्रेसी। किन कंट्रीज में नहीं होता? यूनाइटेड स्टेट्स में, बिकॉज देयर द बजट इज ओपनली डिस्कस्ड। फिनलैंड में भी ओपनली डिस्कस्ड होता है। ठीक है, इंडिया में सिर्फ नहीं होता। सो इसीलिए बी इज द राइट आंसर। ए एंड सी, फिनलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स, द सीक्रेसी ऑफ द बजट इज नॉट मेंटेन। ओके, चलो next question, last one. Which of the following statements is definitely true in the context of the passage? A, okay. Jitesh is saying A. Kumkum is also saying A. Answer is D, none of these. कंसल्टिंग अनजस्टिफाइबल टैक्सेस मतलब जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, ऐसे टैक्सेस को अगर आप पब्लिक के साथ कंसल्ट करो तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, बिकॉज इट स्टिल विल बी अनजस्टिफाइबल। बी तो होगा ही नहीं। देयर शुड बी नो कंट्रोल ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डेमोक्रेटिक सिचुएशन, ये तो होगा ही नहीं। बजट सीक्रेसी इज लाइकली टू लीड टू करप्ट प्रैक्टिसेस, पैसेज में कहीं नहीं लिखा है कि बजट सीक्रेट रहने से करप्ट प्रैक्टिसेस होता है। No. So none of these will be the answer. D. Okay. I know again many of you have answered incorrectly. इसमें घबराने की बात नहीं है। This the passage that we have read is quite advanced. So दो तीन बार आपको ऐसे passages पढ़ना है, समझना है, and then you need to answer. Plus यहाँ पे मैं आपको बार बार passage नहीं दिखा पा रही हूँ। In actual exam you'll get to see and read the passages again and again. So then there will be an advantage also. ठीक है? So with this we complete our first class. Okay. ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। कल हम लोग सेकंड क्लास करेंगे एंड वी विल रीड मोर पैसेजेस, और कल के क्लास में थोड़ा एडवांस लेवल के पैसेजेस रहेंगे। ओके, पहले से मैं बोलकर रख रही हूँ, सो बी प्रिपेयर्ड। एनी क्वेश्चन बिफोर वी रैप अप द सेशन टुडे? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स? Okay, no question. See you all tomorrow then. Everybody take care. Bye bye. Jai Hind.